Okay, right. So, well, hello and welcome to part two of ISI 2025. And we begin with the third problem, which says that suppose that f is a differentiable function with f of 0 as 0. So, it's a typo or many type kiya to, yeah. So, suppose that f of 0 is 0 and if f dash x is uh, less or equal to f of x for all x, then show that this is 0. So, well, so I begin by doing this that since ऐसा कुछ दे रखा है मेरे पास, so we can all agree that this is always greater than or equal to f dash x. That's simply uh, modulus की inequality use कर ली, right? So this inequality gives you that f dash x minus f of x is in fact less than or equal to 0, which gives you that e to the power x f dash x minus e to the power minus x f of x is less than or equal to 0. Well, this number is nice because this is the derivative of e to the power minus x fx, right? And that's less than or equal to 0. So consider the function g of x. Consider the function g of x as e to the power minus x f of x. What we know is that g of 0 is 0 because f of 0 is 0. And we know that g dash x is less than or equal to 0, which means that g is decreasing, right? That tells you that for all x positive, g of x must be less than or equal to g of 0. Q because g is decreasing. That tells you that e to the power minus x into f of x is less than or equal to g of 0. G of 0 is 0 for all x, right? Which tells you that, well, since e to the power x is positive, e to the power minus x is positive, so it tells you that f of x is less than or equal to 0 for all x. Which tells you that there is a problem. Why? Because have a look at this. According to our given condition, f of x is greater than or equal to this number, and this number happens to be modulus of something. The modulus of a number can't be negative. I mean, so this quantity is non-negative. So, अगर ये number non-negative है, तो f of x ought to be non-negative because f of x is greater than or equal to that non-negative number. And since f of x is non-negative, but f of x is less than or equal to 0, that tells you that f of x is identically 0 for all x. Right. So we move on and we march on to the next problem, which is a very interesting one, might I add. And well, I'm going to do something here because जो जो standard method है यहाँ पे जो class high school के students को available होता है that I'm quite at loss कि can this problem be done by those methods? It's not as if that शायद बैठे या फिर कुछ कर ही दे प्रॉब्लम में, like it's entirely possible, but not that I could figure out in real time कि कुछ अच्छा सा ऐसा निकल के आ जाए. Anyway, so the problem says that एक S1 एक सेट डिफाइन किया सर्कल का कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और मैप जो है वो गिवन बाय एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है. F1 इज गिवन बाय F1 F है, and F of k plus 1 is F composed with F of k fundamentally. And then they say that the smallest positive integer n says that f of n is z. It's called the period of z. So determine the number of points S1 of period 2025. So period 2025 का मतलब आप समझ रहे हैं कि that what they're saying is that f of 2025 times z is equal to z. पहली बार कितने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हुआ है, and we know that mod of z is 1. So, well, have a look at this. अगर f of z actually z square है, तो what's f of z? Well, that's f of z square, which is z square squared, which is z to the 4. And then you can argue that f of n times, using induction, आप prove कर सकते हैं that this is n times z, and that's equal to z to the 2 to the n. Right, it's
It just goes like this. So for them, what they're asking is that f of कितनी बार f है भाई 2025 times f times z कितनी बार हुआ पहली बार. So fundamentally this question is that z to the power 2 to the power 2025 is equal to z पहली बार कितने सारे complex numbers के लिए हुआ. This z can't be 0 because mod of z is 1. So therefore this equation is as good as solving this equation. Z to the 2025 minus 1 equal to 1. ये पहली बार कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ट्रू होगा. तो वेल दैट्स सिंपली इक्वल टू 5 of 2 to the 2025 minus 1, which is total number of integers which are co-prime to 2025 2 to the 2025 minus 1. Think about it. सोचिए कि that think about ऐसा आप कुछ भी सोचे, like think about any nth root of unity, and like these are 2 to the power 2025 minus 1 nth roots of unity, by the way. So first of all, look at my argument. My argument is that अगर आपके पास कुछ भी ऐसा है और मैं पूछूं कि that how many complex numbers satisfy this, ऐसे कितने इसके रूट्स होंगे अल्फा, सच दैट पहली बार अल्फा की बार n ही 1 होगा पॉजिटिव इंटीजर्स में. तो वेल इन दैट केस that's equal to the total number of integers less than n which are co-prime to n, and that's simply this. Because think about it, अगर कोई इंटीजर और n का जीसीडी 1 नहीं है, जीसीडी 1 से ज्यादा है, तो do you agree that उसकी वो पावर रेज होने से पहले you will get some multiple of n. Think about it. Just for example, अगर आप 15th root, so let me give you a concrete example. अगर आप एक 15th root of unity निकाल रहे हैं और उसमें आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पहले ही से ले लिया, राइट. सो वो 5 टाइम्स में ही वो बन जाएगा. एंड इफ इट्स नॉट क्लियर देन थिंक अबाउट इट दैट अगर आपने 15th रूट ऑफ यूनिटी निकाली और उसमें कोई 9th रूट ऑफ यूनिटी ले लिया, आप समझते हैं ना कि 9 और 15 का जीसीडी 1 नहीं है. तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट पहली बार ऐसा नहीं होगा कि e की पावर i 2 पाई बाई 9 पे आप 15 पावर रेज करेंगे तभी वो जाके 1 होगा. दैट्स माय कंटेंशन. ऐसा नहीं, उससे पहले ही वो 1 हो जाएगा. बिकॉज आपको 15 का कोई मल्टीपल चाहिए जिसके लिए e की पावर i 2 पाई बाई 9 1 हो जाए, और वो 15 का मल्टीपल आपको मिल जाएगा. आप 45 is a nice number. Getting my point. So yeah, so that's a thing. तो प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई कि जीसीडी निकालना है 2 की पावर 25 minus 1 का, which is well, if not impossible, then very complicated. You'll agree. So what I'm going to do is that it's good to introduce this, but I'm just going to introduce what is called as Mobius inversion. Uh, so I'm going to say that the number of points, थोड़ा सा फंडा में यूज कर रहा हूँ ग्रुप थ्योरी का. Points on the unit circle S1, that is on the unit circle S1 with period 2025, and under the map this f of z is equal to z square is given by Mobius inversion formula. Which is, it's simply equal to mu d, where d divides n. n आप समझ रहे हैं क्या है? z to the power n minus 1 वाला n है, and 2 to the power n by d minus 1, where mu is the Mobius function. mu जो है वो Mobius function है. यहाँ पे n दे रखा है उन्होंने 2025, जिसकी वैल्यू होगी आपके पास 3 की पावर 4 into 5 स्क्वायर्ड. अब इसके जो डिवाइजर्स होंगे, d refers to the divisors of n, तो जो इसके डिवाइजर्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे? इसके डिवाइजर्स होंगे फॉर्म के 3 की पावर a into 5 की पावर b के फॉर्म के, जहां पे a lies between 0 to 4
and B lies between 0 to 2. Is okay. uh, सिर्फ स्क्वायर फ्री डिवाइजर कंट्रीब्यूट करते हैं मोबियस इन्वर्जन में, नहीं तो अदरवाइज mu of d is 0, and like only square free devices जहाँ पे a और b लेस देन और इक्वल 1 है कंट्रीब्यूट करते हैं, नहीं तो फिर अदरवाइज mu of d is 0, है ना। सो अभी क्या करने वाला हूँ, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट वैल्यू डिवाइजर और मोबियस इसकी, सो डिवाइजर एंड मोबियस वैल्यूज। सो अगर आपके पास d की वैल्यू 1 है देन म्यू ऑफ 1 इज 1। d की वैल्यू अगर आपके पास 3 है, स्क्वायर फ्री डिवाइजर बस मैं लिख रहा हूँ, तो म्यू ऑफ 3 की वैल्यू इट्स -1। एंड अगर आपके पास d की वैल्यू 5 है, म्यू ऑफ 5 इज अगेन -1। एंड अगर आपके पास d की वैल्यू 15 है, तो म्यू ऑफ 15 इज अगेन 1। आई थिंक दैट वी हैव काउंटेड ऑल द स्क्वायर फ्री डिवाइसेस, हमने सारे स्क्वायर फ्री डिवाइसेस काउंट कर लिए हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला व्हिच इज mu of d and 2 to the power 2025 by d -1, जहाँ पे d divides 2025 और स्क्वायर फ्री डिवाइसेस की बात हो रही है। सो so this is equal to mu of 1 into 2 to the power 2025 -1 uh, plus mu of 3 into 2 to the power 2025 by 3 आप करेंगे। So 2025 by 3, ये नंबर क्या था मेरे पास? So this is 5 square, which is what? 25, and 25 into what? 27, because 3 आएगा ना आपके पास, so which is 675 plus mu of 5 into 5 से डिवाइड कर दिया भाई आपने इसको, तो क्या हो गया? 81 into 5 was that 405 plus mu of 15, और अगर 15 से तो इसको फर्दर 3 से डिवाइड करेंगे, ये तो करोगे और क्या करोगे? तो अगर आप इसको फर्दर 3 से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 135। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज पुट कर लीजिए, सो विल गेट 2025 -1 and minus 2 to the power 675 -1 minus 2 to the power 405 -1 plus 2 to the power 135 -1. So this is equal to 2 to the power 2025 minus 2 to the power 675 minus 2 to the power 405 plus 2 to the power 135. And that's the answer. Well, I wish there was an easy way to solve this problem, but oh, well, that is that. So, yeah. So, and the last three questions, I'll take them in part 3.